Hello everyone, welcome to Science My Soul. Okay, today we are going to study my living world from NCRT. Okay, NCRT is so important, because in 2020 about 100% question is from NCRT. Okay, now let's start this chapter. From the first page, the Ernest Mayr, known as Darwin of 20th century. This is the only important thing. Okay, now what is living? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism. Growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as a unique feature of the living organism. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list. Okay. Let us try to understand each of these. All living organisms grow. Okay, सारे living organisms grow करते हैं. Increase in mass and increase in number of individuals are the twin characteristics of growth. A multicellular organism grows by cell division. Okay, in plants this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animals this growth is seen only up to a certain age. However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cells. In multicellular organisms, cell division occurs to replace lost cells. Unicellular organisms grow by cell division. One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. This line is important, okay? One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living organisms also grow if we take increase in body mass as a criteria of growth. That's why we can say that growth is not a fundamental, you can say growth से हम पता नहीं लगा सकते कि कोई organism living है non living है क्या है. Okay, now however this kind of growth exhibited by non living object is by accumulation of material on the surface. मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं आउटसाइड से, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इनसाइड. ओके, growth in living organism, growth is from inside. Growth therefore cannot be taken as a defining feature or property of living organism. Okay, आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे. रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज a characteristics of living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing feature more or less similar to those of parents. Okay, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन. अलग अलग जो रिप्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स. एसेक्सुअल में कौन कौन सा? फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू millions of asexual spores. Okay, they produce. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. ठीक है. In planaria, flatworms, we observe true regeneration. Example, fragmented organisms regenerates the lost part of its body and become a new organism. The fungi, the filamentous algae, the protonym of mosses all easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. Example, increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that single cell organism, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. Okay, there are many organisms which do not reproduce. Example, mules, sterile worker bees, infertile human couples. Hence, reproduction cannot be taken as all exclusive defining character of living organism. मतलब देखो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स हो गए, स्टेराइल बी वर्कर्स हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए. इसलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं, है ना. अब आगे आते हैं. अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेटाबॉलिज्म. अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म. All living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, size, function, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reaction occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular. मतलब
देखो ये जो केमिकल रिएक्शंस है वो सारे ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे वो यूनिसेलुलर हो। इसका मतलब ये है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग होने का, है ना। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स exhibit metabolism. The sum total of all chemical reaction occurring in our body is metabolism. No living, no non-living organism exhibit metabolism. कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है ना। Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in a cell-free system. Okay, an isolated metabolic reaction outside the body of organism performed in a test tube is neither living nor non-living. जो मेटाबॉलिक रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म करवाया जाएगा वो ना तो लिविंग होगा और ना ही नॉन लिविंग होगा। हेंस while metabolism is a defining feature of all living organism without exception, और मेटाबॉलिज्म जो है वो सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग। जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब में भी करवाया गया वो नॉन लिविंग है ना, लिविंग नहीं है लेकिन एक लिविंग रिएक्शन है, याद रखना है, ठीक है। Hence cellular organization of body is defining feature of life forms, ठीक है। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli. ये जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली होता है वो एक टेक्निकली सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। Plant respond to external factors like light, water, temperature, other organism, pollutants, etc. All organisms from the prokaryotic to the most complex eukaryotic can sense and respond. Okay. Two environmental clues. Photoperiod affect reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. All organisms handle chemicals entering their bodies. Okay. All organisms therefore are aware of their surrounding. दिस इज नॉन एज कॉन्सियसनेस, ठीक है। अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर रहना कॉन्सियसनेस है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्सियसनेस होता है बट ओनली ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्फ कॉन्सियसनेस होता है। देखो आगे बताया जाएगा। अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। एग्जाम्पल हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। When it comes to human being, it is all the most difficult to define the state and living state. We observe जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बताया गया है, ठीक है। Similarly, properties of cellular organelles are not present in molecular constituent of the organism. जो प्रॉपर्टीज होता है सेलुलर ऑर्गेनेल्स का, ठीक है, वो नहीं आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल। वो मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट नहीं रहता है बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स। बट वो जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो अराइज कैसे करते हैं, इंटरेक्शन से अराइज करते हैं, किसके बीच में, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स के बीच में। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. Okay, biology is the study of life on earth, ठीक है। all living organisms present, past and future are linked to one another by sharing of common genetic material but to varying degree. This line is important. अब आते हैं diversity in the living world. If you look around you will see a large variety of living organisms, maybe plotted plants, insects, birds or pets or other animals. These also serve organelles that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you probably see much greater number and kinds of living organism in it. Each different kind of plant, animals or organisms that you see represents a species, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लाइन जो है इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, दे रिफर टू एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, मतलब बायोडाइवर्सिटी को ये बोलते हैं नंबर एंड टाइप्स ऑफ
ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, अब हम आते हैं आगे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वहाँ पे। ठीक है, hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is named by same name all over the world. This process is called nomenclature. देखो nomenclature का जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, nomenclature का जरूरत पड़ा क्योंकि पूरे दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो फिर साइंटिस्ट कंफ्यूज हो जाते थे अलग अलग जगह के। चलो हम इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। दीज लोकल नेम्स would vary from place to place even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to। वही बता रहे हैं कि मतलब हम लोग कंफ्यूज जाते हैं, यहाँ तक कि एक देश के अलग अलग जगह में उसका नाम अलग हो जाता है, तो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग को एक अलग तरह का उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक मतलब उनका नाम रखने के लिए एक स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एनिमल्स के लिए, और बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें है पहले नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले उनको नामकरण उनका करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ दिया, हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ऑब्वियसली द नॉमेनक्लेचर और द नेमिंग इज only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. In order to facilitate the study, number of the scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, which are provided in International Code of Botanical Nomenclature. ICBN is for plants. And animals, International Code of Geological Nomenclature. ICZN is for animals. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. ठीक है, binomial nomenclature में दो होता है, एक जेनेरिक पहला, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जो जेनेरिक नेम होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया? कार्लस लिनस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Providing scientific names better, the scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how is a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus while the indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules, और जो इसके बारे में और जो रूल्स है, मैग्निफेरा इंडिका मैंगो को बोलता है, जिसमें मैग्निफेरा जेनरिक नेम है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है। इसको छोड़ के जो और जो इसके लिए रूल्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अब। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ये जितना भी अब पॉइंट में पढ़ाने जा रहा हूँ, ये चारों में से चारों एग्जाम में एज सच क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है। ठीक है, biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived with Latin irrespective of their origin. The first word in biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet. देखो, the binomial names are generally in Latin. Binomial names जो generally होता है Latin में होता है और लिखा किस में जाता है? Italics में लिखा जाता है। ठीक है, they are Latinized or derived from Latin irrespective of their, उनको या तो लैटिनाइज किया जाता है यानी लैटिन लैंग्वेज में किया जाता है, या वो डिराइव भी होते हैं लैटिन से। ठीक है, अब आगे, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। ये तो आप जानते हैं फर्स्ट वर्ड जीनस होता है। द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब दोनों वर्ड यानी जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट को लिखा जाता है हाथ से, तो दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड, और जब प्रिंट किया जाता है तो और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, उनको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। क्यों? इंडिकेट करने के लिए उनका लैटिन ओरिजिन को। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। देखो, तो पहला वर्ड जो होता है, जो जेनेटिक नेम होता है, जेनेटिक वर्ड होता है, वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, मैग्निफेरा इंडिका, M कैपिटल है, I स्मॉल है।
Name of the author appears after a specific epithet, example at the end of the biological name and written in abbreviated form. जो ऑथर होता है यानी जो उसको खोजा है उसका नाम लास्ट में होता है, यानी जेनेटिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट के बाद होता है. फॉर एग्जांपल देख लो मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका लीन, यहाँ जो लीन है वो बता रहा है लीनस कि इट इंडिकेट्स दैट स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनस. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. तो सारा ऑर्गेनिजम्स को जान ले इतना आसान नहीं है, इसलिए उनको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, और जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. कैसे? कोई इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पे, यानी कि फिनोटिपिक समझ लो तुम. फॉर एग्जांपल we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characteristics with organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously each one of us will see dog and not cat. Now if we were to think of elastaceans is also a variety of dog. Okay, we know what we are thinking. Okay, similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of the animal with external ears or body hairs. Likewise in the plants, if we talk of the wheat, the picture in which comes. Okay, the scientific name of these categories is taxa. ठीक है, the scientific term for these categories is taxa. Here you recognize that taxa can indicate categories at very different levels. जितना भी डिफरेंट अलग अलग लेवल्स में जो तुम्हारा कैटेगरीज है उनको हम टेक्सा एक साथ टेक्सा बोल सकते हैं. ठीक है, here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs, all are taxa. But you know that the dog is a mammal and mammals are animal. Therefore एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल. देखो ये बोल रहा है कि सारा कुछ टेक्सा ही है. ठीक है, एनिमल, मैमल, डॉग सब टेक्सा है, लेकिन एनिमल, मैमल, डॉग ये तीनों अलग अलग लेवल पे टेक्सा है. ठीक है, एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स. ये टेक्सा है लेकिन अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, hence based on the characteristics all living organisms are classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. External and internal structure along with structure of cell development, process and ecological information of the organism are essential to form the basis of modern taxonomy known as neo-taxonomy. ठीक है, modern taxonomy को ही हम neo-taxonomy बोलते हैं. Hence characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are the basis of taxonomy. पूछ सकते हैं basis of taxonomy क्या है, तो पहले characterization, फिर identification, फिर classification and फिर nomenclature. ठीक है, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversity, but also the relationship among them. This branch of the study was referred to as systematics. ठीक है, important है. The word systematics is derived from the Latin word which means systema, which means systematic arrangement of organisms. Linus used Systema Naturae as the title of his publication. Linus के book का नाम था Systema Naturae. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between the organisms. अब आते हैं taxonomic categories पे. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. Okay, classification एक single step नहीं है, बहुत सारा step इसमें involved है. Since the category is part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. ठीक है, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. देखो अब यहाँ तुमसे पूछ सकता है कि इनको सीक्वेंस में ये करो, तो ठीक है, पहले तुम क्या करोगे, पहले करोगे तुम कैटेगरी, फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की. इस कैटेगरी रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. कैटेगरी क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्न एज टैक्सॉन. ठीक है,
जो कैटेगरी वो एक रैंक को डिनोट करता है और इसको कॉमनली हम टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। ओके, insects represent a group of organisms sharing common features like three pairs of joined legs. Okay, it means insects are recognizable object which can be classified and thus were given a rank or category. You can name other such groups of organisms. Remember, group represent category. Category further denote rank, and each rank or taxon in fact represents a unit of classification. ठीक है, group, then category, then rank, and rank is the unit of classification. Okay, taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, or division. For plants, class, order, family, genus, and species. All organisms, including those in plants and animal kingdoms, have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. अब हम लोग सारे organism को अलग अलग category में कैसे रखेंगे, देखो तो हम उसको पढ़ते हैं. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. This help in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of same kind of organism as well as of other kind of organism. ठीक है, आगे देखते हैं स्पीसीज. ठीक है, taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological differences. ठीक है, let us consider Magnifera indica, ठीक है, Solanum tiburtium potato and Panthera leon tiger. अब देखो इन तीनों को, मैग्निफेरा इंडिका को, सोलेनम टिबोरोशम को और पैंथेरा लियो को, ठीक है, हम लोग बाहर से देख के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी बाहर से देख के बता सकते हैं कि तीनों अलग अलग हैं. ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, टिबोरोशम एंड लियो रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, while the first word Magnifera, Solanum and Panthera are genera and represents another higher level of taxon और कैटेगरी. बोल रहा है कि पैंथेरा लियो, मैग्निफेरा इंडिका, सोलेनम टिबोरोशम, इसमें जो सेकंड वर्ड आ रहा है इंडिका, टिबोरोशम, लियो, ये स्पेसिफिक एपिथेट है या स्पीसीज है ना. और जो स्टार्टिंग का वर्ड आ रहा है मैग्निफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये तुम्हारा जेनरिक नेम है. ठीक है, each genus may have one or more than one specific epithet representing the different organism but having morphological similarities. देखो एक जो तुम्हारा जीनस, उसके पास एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है. ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन मतलब सिमिलैरिटीज होगा उनमें, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होगा, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज. फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट नॉन एज टिग्रिस. ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर. सोलेनम के पास एक अलग है जो है, सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलोंगना. ठीक है, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द genus Homo. The scientific name thus for human beings are written as Homo sapiens. अब नेक्स्ट आते हैं हम स्पीसीज पे. जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. जीनस के पास जो होता है, ठीक है, जीनस comprises group of related species. जीनस क्या है, पहली बात ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा. देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ के ना कन्फ्यूजन आ जाता है कि यार यहाँ क्या लिख रहा है, जीनस के पास ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं स्पीसीज के मुकाबले. ऐसा नहीं है, ये बोल रहा है कि जीनस, देखो फिर से पढ़ो यहाँ पे, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा. कैरेक्टर्स कॉमन किसके मुकाबले बोल रहा है, स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा. अदर जेनेरा के मुकाबले सेम जेनेरा में कैरेक्टर्स ज़्यादा कॉमन होंगे. ठीक है, वी कैन से दैट
Genera are aggregate of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belongs to genus Solanum. ठीक है. Lion, Panthera leo, leopard, Panthera pardus, and tiger, Panthera tigris, with several common features, all species of genus Panthera. ये जो तुम्हारा lion है, ठीक है, leopard है, tiger है, तीनों genus तीनों का क्या है, Panthera है. This genus differs from another genus Felis. Felis जो होता है वो cat का है, ठीक है, ये अलग है तुम्हारा Panthera से. अब आगे आते हैं फैमिली. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. अब फैमिली के पास क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा होगा. स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, जैसे जैसे ऊपर जाते होगे सिमिलरिटीज कम होते जाएंगे. ठीक है. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species. Among plants, for example, three different genera Solanum, Petunia, Dhatura are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, genera Panthera comprises lion, tiger, leopard is put along with the genus Felis, cat का जो था, in the family Felidae. बोल रहा है कि पैंथेरा और जो जीना फेलिस था कैट का और टाइगर लायन ये सब का जो था वो दोनों को मिला के एक फैमिली में रखा जाता है, उसको बोलते हैं फेलिडी. Similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities and some differences. बोल रहा है कैट और डॉग को जब देखेंगे तो उसमें कुछ सिमिलरिटी मिलेगा और कुछ डिफरेंसेस मिलेगा. ठीक है, differences as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae. तो देखो Felidae में आते हैं तुम्हारे कौन से, कैट, और Canidae में आते हैं डॉग. ठीक है, बात है ऑर्डर पे. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters. देखो जो species था, genus था, family था, वो उनको कैसे हमने ये किया था, किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया था, वो था सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे. जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ट. ठीक है, ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी is the assemblage of family which exhibit a few similar characters. ठीक है, बोल रहा है कि क्या है ये ऑर्डर, क्या है ऑर्डर, जो है वो बहुत सारा फैमिली का एक साथ जब लाते हैं तो उसको ऑर्डर बोलते हैं, जो फैमिली से कम इसके पास सिमिलर कैरेक्टर्स भी हैं. ठीक है, आप उसी पेज में देखोगे कि एक आपके पास डायग्राम बना हुआ है. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. चलो मैं इस डायग्राम को बाद में ले लूँगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे. Order being higher category in the assemblage of family which exhibit a few similar characters. Thus, similar characters are less in number as compared to different genera including in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonials. याद रखना है, mainly based on the floral character. The animal order कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी. अब देखो पिछले वाले में हमने देखा था कि फेलिडी है, कैट का है, कैनिडी है, डॉग का है. अब ये दोनों मिला के एक ऑर्डर में रखे जाते हैं और उस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं कार्निवोरा. ठीक है, अब आते हैं क्लास पे. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा comprises monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog. ठीक है, क्लास मैमलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो. देखो इसी का मैं बात करते हैं, ये जो बॉक्स है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम. ठीक है, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं फाइलम पे. क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on the common characteristics like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to higher category called division. अब आते हैं kingdom पे. ठीक है, all animals belonging to various phyla are assigned to the higher category called kingdom. Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae on other hand distinct and compresses all plants. देखो Animalia में animals आएंगे, Plantae में plants आएंगे. The taxonomic categories from species to kingdom had been shown in the ascending order starting with species. These are broad categories. However, taxonomists have also
developed subcategories in their hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. ठीक है, बोल रहा है कि साइंटिस्ट ने सब फैमिलीज का भी इजाद किया हुआ है. ठीक है, लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1. हमने फिगर 1.1 पहले ही देख लिया. As we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि भाई जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करेंगे. लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सन शेयर. जितना लोअर टेक्सा होगा, ये दोनों लाइन एक ही है, मीनिंग दोनों का एक ही है, बस अलग अलग तरह से लिखा हुआ है. जितना लोअर टेक्सा होगा उसमें सिमिलर कैरेक्टर्स उतना ज़्यादा. ठीक है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा. देखो जितना हाई कैटेगरी ऊपर हाई में जाएंगे हम, उतना एक दूसरे से रिलेशन को फाइंड करने में हमको डिफिकल्टी हो, क्योंकि सिमिलर कैरेक्टर्स कम रहता है. अब ये होगी, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है. देखो इसमें पहले कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन. ठीक है, तो मैन का होमो सैपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम डिवीजन कॉर्डेटा. हाउस फ्लाई म्यूस्का डोमेस्टिका, म्यूस्का म्यूस्केडी, डिप्थेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा. देखो जो याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट है ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, जैसे हाउस फ्लाई का. ठीक है, और देखो मैंगो में भी तुम देखो यहाँ पे मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, जीनस मैग्निफेरा, यहाँ तक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा. फैमिली से पूछेगा एनाकार्डेसी, ऑर्डर से पूछेगा सेपेंडल्स, क्लास से पूछेगा डाइकोटिलेडनेसी, फाइलम डिवीजन से पूछेगा एंजियोस्पर्मी, वीट का टाइट्रिकम एस्टिबम, टाइट्रिकम पॉलिस, मोनोकोटिलिडनस, एंजियोस्पर्मी. अब एक पहले एनसीईआरटी में था तुलसी, ऑस्किमम सैंक्टम. ठीक है, तो ऑस्किमम इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा पढ़ने का इसमें जरूरत नहीं. अब आते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स. सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो है, जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and in general in knowing our bioresources and their diversity. These studies will require correct classification and identification of organisms. Identification of organisms require intensive laboratory and field studies. The collection of actual specimens of plants and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. These are also fundamental to the studies and essential for training in systematics. It is used for classification of an organism, and the information gathered is also stored along with the specimens. In some cases, the specimens is preserved for future studies. ठीक है, biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as specimens. Some of these are explained to help you understand the use of these aids. अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. क्या एड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. पहला है हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड. एज सच एकदम सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करता. ठीक है, फर्दर दीज सीड्स आर अरेंज्ड according to the universally accepted system of classification. These specimens along with their description on herbarium seed become a storehouse or repository for future use. The herbarium seed also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical names, family, collector name, etc. Herbaria also such as क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज. इसके हर एक लाइन से क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, और आएगा भी. botanical gardens. These specialized gardens have collection of living plants for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purpose, and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. The famous botanical garden are at Kew, England, Indian Botanical Garden, हावड़ा, एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ. ये दोनों याद रखना है कहाँ कहाँ पे है ये सब. ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स. म्यूजियम. Biological museum are generally set up in the educational institutes such as schools and colleges. Museum has collection of preserved plants and animal specimens for study and reference. Specimens are preserved, okay, in the containers or jars in preservative solutions. Plants and animal specimens may also be preserved as dry specimens. Insects are preserved
इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, ये सीक्वेंस पूछता है, पहले कलेक्टिंग फिर किलिंग फिर पिनिंग, ठीक है। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, लार्ज एनिमल्स को कैसे, तो स्टफ्ड एंड देन प्रिजर्व। म्यूजियम ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, आपके स्कूल में होगा म्यूजियम, 11th-12th में आपने देखा होगा, है ना। अब आते हैं जियोलॉजिकल पार्क्स, जिसको जू बोलते हैं। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कीप्ड इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर food habits and behavior. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat. Children love to visiting these parks. Okay, अब आते हैं next key, important है. Key is the another taxonomical aid used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. The keys are based on contrasting character. ये क्वेश्चन आ चुका है. Generally in a pair called couplet. It represents the choice made between two opposite options. This results in the acceptance of one and rejection of the other. Each statement in a key is called lead. Important. Separate taxonomical keys are required for each taxonomic category, such as family, genus, and species for identification purposes. Keys are generally analytical in nature. Important. ठीक है. Flora, manuals, monograph, and catalog are some of the other means of recording description. They are also help in correct identification. Flora contains the actual account of habitat and distribution of plant of given area. Flora. Okay. These provide the index of the plant species found in a particular area. Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area. Monograph contain information on any one taxon. Okay. अब आता है समरी. समरी आप पढ़ लेना, फिर भी एक नॉर्मल में पढ़ा देता हूँ, ठीक है. द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है. या आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन. द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद देयर एक्सपेक्ट इज रिफर्ड टू एज टैक्सोनॉमी, ठीक है. यूज क्या क्या है, agriculture, forestry, industry, and general of knowing our bioresources. The basis of taxonomy like identification, naming and classification of organisms, ठीक है. अब इसमें बायोलॉजिकल नेम में 2 वर्ड होते हैं, जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है. अब taxonomists have developed a variety of taxonomic aid to facilitate identification, naming and classification of organisms. Live specimens on the other hand of the plants and animals are kept in botanical garden or in zoological park. Taxonomists also prepare and disseminate information through manuals and monograph. ये क्वेश्चन आया है. For further taxonomic studies, taxonomic keys are the tools that help in identification based on characteristics. थैंक यू. आज ये चैप्टर पूरा होता है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है. कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू.